Thank you, Anand. I'm very excited with this. Well, you've given me something very significant that you need to be anchored. So I'll keep the anchor. And I've given you something significant saying what's in your heart, be proud to wear it on your sleeve too. Absolutely. That's our tricolor, isn't it, ladies and gentlemen? So let's start from there. What drives you, Ayan? Because 3 films, 2009, but you've assisted before that, 2004, 2005. You worked with some of the top talent directors in the world, in India. But I want to understand from you, why the gap, one, and the process? Let's start from there. No, so you asked me 3 questions very quickly. What drives me? I think, you know, when you start off in life wanting to be a filmmaker, become a filmmaker, you just love movies and you don't even know, you want to be a part of it and you want to touch people with your movies and you don't really know what you're trying to say. You've not thought about anything. As we all get deeper with our profession, you know, understand it more and more, I think what drives me has changed over the years. You know, excellence in cinema, growth for myself, trying to touch themes that are challenging, that will move people. I think it's that pursuit of excellence that drives me. What is this thing with Ranbir Kapoor and Ayan Mukerji? Wake Up Sid, Ye Jawani Hai Diwani, and Brahmastra? It happened very organically, Anand, honestly. You know, the films, we all have our own sort of like the creative journey has its own little thing that happens, magic that happens. Initially in my career, I was writing about characters that were very close in age to me and were going through experiences that young people around the same age as me were going through. Ranbir was a natural fit. We became friends. He's a great actor. In the younger generation, certainly one of the leading people. So it just happened that way. And Wake Up Sid, like you said, was what you were going through? Irreverent, rebellious, want to do something and not so clear about what you want to do in life, but still full of energy and verve. And Ye Jawani Hai Diwani also, 4 years later, had a little bit of that, but there was a little bit of a maturity. But then comes a huge gap. So what happened in that time? So, I don't know how, have some of you seen Brahmastra here? Some of you have seen it. Okay, but everybody knows about the film. So, Anand, Brahmastra was a very different kind of film. It was a big leap for me because it was a very original concept. In some way, to be very honest, now that it's been a few months since the film has come out, I feel like we only touched the tip of the iceberg of this concept in Brahmastra 1. And some people, especially young people, have picked up on it that from Brahmastra 1, I actually want to create a universe of cinema which fits underneath the word Astraverse. And what it really is stories very deeply inspired from Indian history, old Indian stories, bringing some of that ancient Indian spirituality into the modern world. And this combination, I want to actually keep exploring and telling different stories, using it in the way in which like Marvel Studios has so many films that come under it. But the work I was doing wasn't based on an existing piece of literature, the way that, you know, Spider-Man is based on Spider-Man comics that have existed for so many years. It was a jump into the unknown. So to create the concept and to put this kind of film together that looked the way it did, it needed a lot of time because it hadn't been done before. And I like to believe that what we created with Brahmastra was not just that film, but was the foundation for a universe of cinema. So now as we go ahead, I'm hoping we can move a lot faster. Did people ask you within your friend circle, family, "Ye kya kar raha hai? Why are you doing this?" Constantly. You always get that.
You know, and I guess we work in film, it's very public, the way you're working, your process. People know ki film ban rahi hai, actors have filmed, they know the actors. I get that all the time. You know, I got that all the time. But if I'm being honest, I knew what I was up to. I had examples of stalwarts like James Cameron who've given 12 years and then created Avatar. So I felt कि यार कुछ बड़ा करना है life में, then you have to give it your all. Otherwise, how are you going to do it? You know, otherwise it'll be run-of-the-mill stuff. So this Astra-verse is a very unique concept, and you said it drives inspiration or draws inspiration from the Marvel universe or the DC universe. So and you create characters, and each character then can become a 70 film or a concept. Well, to be honest, in the Astra-verse, no, it took me a while to articulate this, Anand. But if you watch the film, so there are all these characters in the film, but there are all these other different Astras in the film. And the characters are really the Astras. Like, you know, if you all have seen Brahmastra, there's a scene at the beginning of the film where Mr. Shah Rukh Khan's character has the Vanar Astra. It gives him the power of almost like the spirit of Hanumanji. Yeah. And it gets lost at some point in the film. So the idea is that that lost Vanar Astra, maybe some other person finds it and we can weave a new story. So the characters are really the different Astras. The Vanar Astra, the Nandi Astra, the Jal Astra. And I have some stories in my mind of how we can take each of these Astras into different parts of India and tell different stories about modern India with different problems happening. And you know, but build then from why there. on 70 Why not make a game series? Everybody is into gaming. This just sets right for a gaming series, an engaging gaming series that everybody will get hooked. Anand, ye sab karna hai. Help me. If anybody here can help me, this building stuff in India, na, it takes, we are at it. This is the plan. Games, you know, I believe a lot of children, now I realize, responded very well to Brahmastra. Like that age group really, perhaps because of the wonder of it all, the magic of it all, has responded. So I really want to do stuff which also touches children more. Right. You know, so I have lots of thoughts. We have to make them a reality. Let me ask you this. Your process comes from what you want to do? Or do you draw insight from what you think the cinema watching audience is open for? Like, how much did a success of Bahubali influence your conviction to go ahead and push with Brahmastra? So quickly, so Brahmastra was on, you know, even when Bahubali was, when it was releasing, we were already on with Brahmastra. So we would have gotten there anyway. But that place that a film is made from is certainly influenced by what's going on in pop culture, global pop culture, Indian pop culture, certainly. I knew many years ago that to make films for the big screen, you got to make, like I needed to step up from Ye Jawani Hai Diwani, and a lot of people really love that film, and it was my heart, that film. But I realized that cinema was headed in a direction, and that was because I saw it happening in the West, that the films that lots of people were going for were the big films, the big spectacle films. So you definitely draw from pop culture, but then there's also your own inner creativity that, okay, I know the rules of the game, but now what can I do in this, within these rules? So that's a very I might try to intellectualize it and give you an answer, but it's a combination of all these things that boils down into an instinct. And you go with that instinct. Did COVID upset your plans? To be very honest, COVID, I mean, I don't mean to say it gave us time that actually, it upset our plans, it disrupted them, but it gave us time that we needed on Brahmastra. I took the time to make Brahmastra a little better than it would have been. So, yeah. There were many mixed reactions about your promos and how you wanted to promote the movie. How do you react? You feel? I heard them. A lot of people loved it. Some of them said, "Kya banaya yaar? What is on the film, more than the promos, you mean? On the film. Yeah, I think it's, you know, did really good numbers. So a lot of people embraced the film. It did really well when it came out on streaming. But all the little critique that I've got... Was it one of the highest grossing films in 2022? In 2022? Yeah, I think it's probably from the Hindi film industry, the highest grossing film in 2022. It did super well on streaming when it came out. But I still hear that criticism very clearly. And the thing is, I accept and agree with some of it. And some of that criticism mainly came down to some aspects of this writing and the story of Brahmastra.
उसको अभी अच्छी तरह से समझ के पार्ट 2 में और बेटर करना है. पार्ट 2 में और बेटर करना है. हाँ. Has Bollywood got it right now? Or I shouldn't say Bollywood, the Hindi film industry, because there's a lot of talk that the Hindi film industry does not understand what the movie watching audience Anand, wants. it's very hard. Like if I asked you that question about like all the people, if you had a successful program and I asked you to comment on like other news people, I'm nobody to make that kind of a comment about the Hindi film industry. It would sound arrogant. I think the Indian film industry, outside of Hindi, all over the country, people are doing their best to understand the evolving tastes of our audience. I hope more and more people get it right, because cinema is one of the main art forms that exists in our country. I think it's the main art form that, you know, people come together to go and watch. And the more it thrives, we all have a common culture amongst us, common references. It's really important for a society to have art in it. So I hope that, you know, we keep getting it right and right and more right. Well, I got 38 seconds on the clock. You can see that clock in front Yeah, of us. I So see it when ticking. is Brahmastra 2? When should we expect it on the screens? So Brahmastra 2 and 3 are going to be made together. Wow. This was something I didn't know when we released part 1. And the truth is, we are going to take a little bit of time to write it. I know there is a lot of anticipation, people want it to come out, but pehle achhi tarah se likhenge without compromising it. And I think it will be about 3 years from now before we can see Brahmastra 2 on the big screen. So 3 years from now. 3 seconds. 3, 2, 1. 1. Ladies and gentlemen, Ayan Mukerji. Thank you. Thank you so much. Thank you, Ayan. We will look forward to seeing Brahmastra 2 and 3 years from now. And hopefully the Brahmastra franchise will become as big as the Marvel franchise someday. Thank you so much. Thank you. I'm going to request Anand to present a memento to you as a token of appreciation. Thank you very much. And congratulations again on the huge success of Brahmastra. Thank you all for being a great audience. We've had some amazing sessions in the last few hours, but there's much more in store for you. Stay tuned. Day 2, we're coming to the fag end. This is the slogovers, as it were, the concluding sessions. Ladies and gentlemen, as you all know, India has made great strides over the last few years, economically and in the foreign policy space. But today, we are also widely a nation whose time has come. This optimism finds resonance on the playing field as well. A rising India is riding high on the cricket pitch. Both the men's and the women's cricket teams are rampant. We're also tasting consistent success in boxing, badminton, football, wrestling, and of course, athletics. We've just had 4 gold medals in boxing, and one of those gold medal winners is going to be with us here tonight at Rising India. But having said that, for a medal-hungry nation of over 1 billion people, we still have a lot of catching up to do. We still have a lot more to do to emulate the success of countries like China or other Asian countries. So it gives me great pleasure, ladies and gentlemen, and please put your hands together for welcoming Shri Anurag Thakur, Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports. And he's going to be in conversation with my colleague, CNN News 18's Shivani Gupta. The session is going to be titled Sports for Development. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen, for Shri Anurag Thakur. Shivani, the stage is yours. Zaka, thank you so much. A big round of applause one more time for Sports Minister, Information and Broadcasting Minister, Shri Anurag Thakur.
amidst us, and it gives me great pleasure, Anurag ji, after Indian of the Year, you've come back, you've made time for our Rising India Summit. सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कल इस मंच पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे और उन्होंने एक बड़ी बात बोली. उन्होंने कहा ये जो पूरा बवाल अभी हो रखा है सीबीआई, ईडी एजेंसीज के ऊपर, जब उनकी पूछताछ हो रही थी तो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर फोर्स डाला गया था और उन्होंने बताया कि मोदी का नाम लेने के लिए फोर्स करा जा रहा था. तो आपको लगता है कि उस वक्त की बीजेपी ने जैसे वो सिचुएशन हैंडल करी और आज जो ऑपोजिशन में बहुत फर्क दिख रहा है आपको? नमस्कार, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई. जय श्री राम. अगर देश के गृह मंत्री ने जो कहा और उस समय की घटना के बारे में कहा जब पूरी कांग्रेस में ये दिखता था कि अगर कोई 2014 में उनको चुनौती दे सकता है तो नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, और कितनी खतरनाक प्लानिंग कांग्रेस ने की होगी कि ही उनकी ही सरकार के गृह मंत्री से उनके ही खिलाफ विद्रोह करवाने की सोच रखी होगी. ये कांग्रेस ही कर सकती है. लेकिन वो भूल गए, झूठा काम ना कभी अमित भाई ने किया है ना करते हैं. वो तो देश के लिए समर्पित हैं, तभी तो 370-35 से जो नेहरू जी की देन थी उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है. मंसूबे उनके सत्ता में रहने के थे, लेकिन यहां पर सरकार आई तो सीईए जैसा कानून भी आया, ट्रिपल तलाक से छुट्टी भी मिली, 370-35 से भी गया, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनी है. बट एजेंसीज का मिसयूज आज हो रहा है, जो भी हुआ हो. ऑपोजिशन में कौन? लालू प्रसाद यादव जी, जो चारा घोटाले में, जिन्होंने जानवरों को नहीं छोड़ा, उनके चारे को नहीं छोड़ा, उनका इस्तीफा हुआ. अब उनके ऊपर तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, ये पूरे परिवार पर जांच चल रही है. दूसरे अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी सरकार के कम से कम 10 ऐसे लोग, विधायक और मंत्री जेल में या बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामलों में. सत्येंद्र जैन जेल में है, जिनको भारत रत्न दिलाते थे और 10 महीने से जेल में है. दूसरे उनके शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, जिनको शहीद भगत सिंह से तुलना करते हैं. और तीसरे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर हैं. ये सब लोग बीबीसी चला रहे हैं. भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन. तो जितना मर्जी भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन चलाएंगे, कोई बच नहीं पाएगा. आपने राहुल गांधी का नाम लिया. उनका जो डेफेमेशन का केस में उनको सेंटेंस हुआ है और उसके बाद उनकी लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उस पर बड़ा बवाल हो गया है. और अब 2 कंट्रीज ऐसी हैं, यूएसए और जर्मनी, जिन्होंने कुछ जवाब भी दिया है. उनका जवाब आप किस तरह से लेते हैं ये भी बताइए हमें. उन्होंने बोला कि वो केस को देख रहे हैं, भारत में कैसे चल रहा है, दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट हुआ ये है कि दिग्विजय सिंह, सीनियर कांग्रेस लीडर, ने उनका धन्यवाद किया है कि उन्होंने इस बात को नोटिस किया है और इस पे टिप्पणी करी है. बीजेपी ये कहती रहती है कि राहुल गांधी ने फॉरेन इंटरवेंशन की बात करी थी, तो क्या ये फॉरेन इंटरवेंशन लग रहा है आपको? देश का अपमान करने में कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रहती. लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई जब देश में नहीं लड़ पाए तो विदेशी जमीन पर जाकर विदेशी एजेंसियों की और विदेशी सरकारों की मदद मांगने में राहुल गांधी जी और कांग्रेस पीछे नहीं रही. यह भारत के लोकतंत्र पर हमले से कम नहीं है, और इसका जीता जाता सबूत अब दिग्विजय सिंह जी ने दे दिया है. जब राहुल गांधी जी लंदन में थे, कैम्ब्रिज में बोल रहे थे, तो मैंने कहा था लंदन लाइज एंड कैम्ब्रिज क्राइज से बाहर आ जाना चाहिए राहुल गांधी जी को. आज फिर कहता हूं, यह कांग्रेस का रोना धोना. क्या राहुल गांधी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सजा सुनाई गई और जिनका इस्तीफा हुआ है? मैं आज ये केवल कागज इसलिए लेकर आया हूं सारे के सारे,
ये 2013 से लेकर आज तक जिन 13-14 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुई और उनको अपनी विधानसभा से और लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा, उन सबके चिट्ठे यहाँ पे श्रीमान राहुल गांधी जी से लेकर लालू प्रसाद यादव जी तक हैं। क्या राहुल गांधी जी तब रोए थे जब लालू प्रसाद यादव को जेल हुई थी? उन्होंने क्या तो तब ऑर्डिनेंस हुए थे फाड़ा जब था। तब जयललिता जी को मुख्यमंत्री रहते इस्तीफा देना पड़ा था? जब जगजीत शर्मा से लेकर बाकी सांसदों को इस्तीफा देना पड़ा? क्या राहुल गांधी के लिए देश में नया कानून बने? क्या एक व्यक्ति देश और संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? उनका अहंकार उनको आज यहां तक लेकर आया है। कांग्रेस में अब लोग ये कहने लगे हैं, इनफैक्ट कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज ने भी बोला है कि ये कानून वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस है और ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए 2 साल की सज़ा होने पर, और वो भी डेफेमेशन जैसे केस पे। तो एक्चुअली इस कानून पर विचार करने की ज़रूरत है। अरे भाई, जब इनकी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में जजमेंट दी थी, तब राहुल गांधी जी की सरकार उस समय ऑर्डिनेंस ला रही थी। ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने हाई मॉरल ग्राउंड लेते उसके ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। आज जेल में है, आज जेल सजा हुई है इनको 2 साल की। ये अनुराग ठाकुर ने या किसी मोदी सरकार ने कानून नहीं बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2013 की है। राहुल गांधी जी ने कोई पहली बार माफी नहीं मांगी, 2018 में भी माफी मांगी थी। जो कहते ना कि गांधी माफी नहीं मांगता, अरे वीर सावरकर जी का अपमान कर दिया आपने। राहुल कभी सावरकर हो भी नहीं सकता, क्योंकि सावरकर जी ने देश के लिए जेल भुगती थी। आपका जो पृष्ठभूमि है वो दिखाता है। आप तो नाभा जेल में जब नेहरू जी को डाला गया तो लिखित में माफी मांग कर आए थे। राहुल जी जरा पीछे पढ़ के देख लेना क्या हुआ था। सावरकर जी ने देश के लिए काल कोठरी में रहे, वापस आकर स्वतंत्रता सेनानियों के बाकियों के साथ जोड़कर देश को उस ओर लेकर गए। मेरा सवाल केवल इतना है, अगर आपने 2018 में माफी मांगी थी तो 2019 में आपके खिलाफ 7 मुकदमे और बेल पर हो। मैं आप सबको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक मामले में नहीं, राहुल गांधी जी 7 मामलों में बेल पर हैं। नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है और ऐसे 6 और अवमानना के मुकदमे उनके ऊपर हैं जिनके ऊपर वो बेल पर हैं। दूसरी बात, अगर एनसीपी के सांसद लक्षद्वीप के जिनको 10 साल की सजा हुई, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनकी सजा पर रोक लग गई, अब उनको वापस सांसद बनाने का बोल दिया गया है। राहुल गांधी जी क्यों नहीं कोर्ट गए? पहली बात ये, राहुल गांधी जी ने माफी क्यों नहीं मांगी? पिछड़े समाज का अपमान किया, भरी सभा में किया, पूरे पिछड़े समाज को गाली निकाली। लेकिन पिछड़े समाज के आगे राहुल गांधी कैसे झुके? भाई इतने बड़े परिवार से आते हैं, उनका तो अहंकार इतना है कि वो पिछड़े समाज से माफी कैसे मांगे? दूसरी बात, वो कोर्ट में वापस जा सकते थे अपील करने। कांग्रेस पार्टी में 6 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई और बड़े वकील हैं वो। क्या एक ने भी राहुल गांधी जी को सलाह नहीं दी कि आप जाके कोर्ट में अपील कीजिए, आपके दंड पर रोक लग जाएगी, आप सांसद बने रहेंगे? और इसमें लोकसभा का रोल कहां है शिवानी जी? इसमें तो जैसे ही कोर्ट का आदेश आता है उसी क्षण उसी पल आपकी सदस्यता चली जाती है। केवल लोकसभा सेक्रेटरीएट को आपको उसकी पुष्टि करनी होती है जी। तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश भर में कि राहुल गांधी के खिलाफ अन्याय। ये 14 लोगों की सूची है जी, ये सबके ऑर्डर्स मैं साथ में लेकर आया हूं। जयललिता जी से लेके लालू जी से लेके राहुल गांधी जी तक सबके ऑर्डर हैं। कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन गांधी परिवार अपने आप को भारत के कानून से ऊपर समझता है, भारत की संसद से ऊपर समझता है और अपने आप को देश से ऊपर समझता है। कभी जर्मनी के घुटने टेकता है, कभी अमेरिका में घुटने टेकता है, कभी अमेरिका में घुटने टेकता है, कभी इंग्लैंड में घुटने टेकता है। भारत के लोग वोट देते हैं, वहां जितना मर्जी धोना धोना कर ले, यहां पर गुजरात से लेके त्रिपुरा, त्रिपुरा से लेके मेघालय और नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है।
बट आप क्यों मानते हैं कि उन्होंने चैलेंज नहीं किया? आपने कहा था कहीं पे कि कोई कंस्पिरेसी चल रही है क्या कांग्रेस के अंदर कि वो राहुल गांधी को हटाना चाह रहे हैं? ना आज तक प्रियंका जी ने इसका जवाब दिया, ना कांग्रेस के किसी और नेता ने। ऐसे कौन लोग हैं जो राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहते हैं? ये सोची समझी साजिश किसने रची? नहीं, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये साजिश है? क्योंकि हो सकता है ये उनकी स्ट्रैटेजी हो, वो सिंपैथी गार्नर करना चाह रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं। सड़क पे कहीं पे 4 लोग और कहीं तो राजस्थान में एक मंत्री ने यहां तक कह दिया अगर राहुल गांधी की सपोर्ट में नहीं आओगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे। यानी कि आने वाले तैयार नहीं हो पा रहे लोग, भटकते फिर रहे कि कोई सपोर्ट में आ जाए। तो आपको लगता है इससे कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस को? अरे किस बात का फायदा को? पूरे पिछड़े समाज का अपमान करने वाले को क्या लगता है पिछड़ा समाज सपोर्ट करेगा? क्या बाकी लोग जिनके लिए भारत का कानून एक जैसा है वो किसी और दूसरे व्यक्ति को सोचे जो देश के कानून से उसको सपोर्ट करेंगे? जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है क्या उसको सपोर्ट करेंगे? योगदान क्या है उनका देश के लिए? क्या योगदान है? आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो जो दूसरे बार बार कहते हैं कि हमारे परिवार ने कुर्बानी दी। अरे देश में 60 साल से ज्यादा राज आपके परिवार ने और आपकी पार्टी ने किया है। हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी लेकिन उनको सांसद बनने का अवसर भी नहीं मिला। लेकिन आपके परिवार को कई बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, 3 पीढ़ियों को। आप बार बार ये कहते हैं कि वो विदेशी देशों के सामने घुटने टेक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि उन्होंने तो कभी इंटरवेंशन मांगा ही नहीं। और अभी भी अगर वो बात कर रहे हैं तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि दूसरे देशों को देखना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि भारत में अब डेमोक्रेसी नहीं है तो दुनिया को फर्क पड़ना चाहिए इससे। क्या भारत के संवैधानिक संस्थाओं में कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? ये बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, ईवीएम पर, सेबी पर, आरबीआई पर, बाकी संस्थाओं पर। इनको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। इन 75 वर्षों में जिन संस्थाओं के कारण भारत आगे बढ़ता गया, भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। दुनिया के किसी देश में इतना दम नहीं कि 140 करोड़ के देश में इतने साफ सुथरे चुनाव करवा लें। आप किसी राज्य में जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, आप हार गए तो ईवीएम में खराबी है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। बीजेपी बार बार ये बोलती है कि एक वेस्टर्न नैरेटिव है इंडिया के खिलाफ, उसकी ग्रोथ के खिलाफ वेस्टर्न एजेंडा चलता है, उसमें बहुत से भारतीय लोग भी मिले हुए हैं। अभी आपने बीबीसी टर्म यूज़ किया, आपने देखा होगा कि उस डॉक्यूमेंट्री को लेके कितना बवाल हुआ। उसके बाद कुछ ओपेड्स वगैरह भी लिखे जाते हैं, मैगजीन में कवर होते हैं। बट क्या बीजेपी लेड सरकार, सेंट्रल सरकार इस नैरेटिव को इफेक्टिवली काउंटर कर पा रही है? अगर ये नैरेटिव है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको काउंटर करें, इफेक्टिवली करें। सन 2001 के बाद 22 साल हो गए। देश के अंदर और देश के बाहर, चाहे राजनीतिक दल हो या मीडिया हो, एक सुनियोजित ढंग के साथ मोदी जी के खिलाफ प्रचार किया। और मुझे बताइए, पूरे देश के कोर्ट्स, सभी जांच एजेंसियों ने अपनी जांच कर ली, सुप्रीम कोर्ट तक जाके निर्णय हुआ, तो उसके बाद बीबीसी कहां से जागी? 2023 में क्या महत्व था उसका? चुनाव आने से पहले सब ताकतें जाग जाती हैं। क्या देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बीबीसी हो गया है? आप तय कर लीजिए देश के अंदर किसका चलना चाहिए। और दूसरी बात, ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, नीच कहा, पिछड़ी जाति का कहा, चाय बेचने वाला कहा, और अब न जाने और क्या क्या कह दिया। लेकिन लोगों के दिलों में नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। तभी 2014 में 30 वर्षों के बाद अगर किसी को पूर्ण बहुमत मिला तो नरेंद्र मोदी जी को मिला। और 2019 में उससे ज्यादा सीटों के साथ फिर एक बार सरकार 303 सीट